Okay, so we're gonna use the tool over here, which is 32.1 as per the Heartbleed. So Python 327 and the IP address. So there was a mistake again, so we can try the different one. Python Heartbleed 10.10.10.79, and over here we have our text value, which is from a plain text. So as per the record, this is a base64 encryption, and the server side response, they basically convert the base64 encryption standard. So we're gonna use decode this one. So echo the value pipe base64, and we're gonna use -d, which is decode. So we can see the word called Heartbleed over here. Heartbleed, bleed the hype. Believe the hype. And as per the data record, this was a key of hype, and hype might be a user. You can try. It's not 100% sure that it will be a user or what. For that case, what we're gonna do, we're gonna use the encryption standard, just like the key over here. For that, we're gonna use the same Valentine, the hype key. So I'm gonna use SSH-I and the RSA key, which is your hype. And we're gonna use hype @10.10.10.1779, and it's asking us for the encryption. I say yes. हाइप की जो आपकी होती है वो आपकी प्राइवेट की होती है किसी सर्वर में कनेक्ट करने के लिए, बट अभी देखते हैं कि कनेक्ट करता है कि नहीं करता, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड हिम द पासवर्ड ऑल्सो. द प्राइवेट की इज इग्नोर्ड. परमिशन ऑफ 6444 ऑफ हाइप आर टू ओपन, और हमने इसे परमिशन नहीं दी एक्चुअली अभी तक. और ये जो था बिलीव द हाइप, इट वाज द पासवर्ड ऑफ योर हाइप ओवर हियर, जो कि अभी काम नहीं करेगा. बिकॉज वी डिडंट गिव हिम द परमिशन. हमने बेसिकली जो हमारी RSA की है, जो हमने आइडेंटिफाई किया था, इसको प्रॉपर परमिशन नहीं दिया था हमने. फॉर गिविंग द परमिशन, RSA की परमिशन. So we can give private key or we can give the public key. So public and private key में कोई बता सकता है कि मुझे इसमें परमिशन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? करेक्ट परमिशन टू SSH key and configuration files. Anyone? Change mode 6444. Is it okay to have change mode 6664 as per the record over here? Change mode 6444 and the key. Let's try it again. Because इसको ओपन करने के लिए आपको परमिशन देना पड़ेगा हाइप की को, और चेंज मोड से हम परमिशन ग्रांट करते हैं सर्वर साइड में. The private key
will again ignore bad permission. So anyone has an idea how to open this file? सर 600 दे दो. 600. अब आपने बोला 600 को थोड़ा एवेल्यूएट करूंगे क्यों? रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. रीड को 4 बाइट की होती है, राइट को 2 बाइट की होती है और इसको 1 बाइट की होती है. यानी कि आप सिंपली अगर यहाँ पे देखो रीड राइट एग्जीक्यूशन, रीड राइट एग्जीक्यूशन, रीड राइट एग्जीक्यूशन, जो सबसे पहला होता है वो आपका रूट का होता है, sudo user and sticky keys, and you are giving read and write permission over here इस फाइल को. change mode 600 hype, you have given the read and write permission over here. ssh -i hype key user hype @10 Yes. Let's copy this one. Now the password has been opened. Read and write to the root user. And we are logged in on the Valentine machine. So as we can see, who am I? It's a silly thing. We are hype. So जो मशीन के बाहर तक करना वो डिफिकल्ट होता है, बट अंदर आने में आपको इजी हो जाता है. अगर आप यहाँ पे देखो sudo -l, check the permission, hype का पासवर्ड. Okay, why is asking me the same thing over here again and again? Encrypt password attempt 3. Okay, cool. Doesn't care. So what will the post exploitation? Post exploitation में बेसिकली क्या है कि आपकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो 2 वेबसाइट की मैं हमेशा बात करता था, गॉट मिल्क एंड पयाटो. सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज करते थे, जिसमें से मैं पयाटो यूज करूंगा और चेक करूंगा. एज पर पेंटेस्टर अगर आप नए हो तो आप मैनुअली 6 के 6 तरीके अपने आप यूज करोगे. बट फॉर ओवर हियर आई एम गोना यूज द सेकंड वन, एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज व्हिच आर रनिंग एज रूट परमिशन, which has a root services. So how to check those things? Netstat, ANTP, it shows you all the port which are running and the listening. We can check for the services which are running locally if they are to be exploited or not. Netstat, ANTUP. So we can see there are some applications which are listening and they are not showing the process IDs. But we can see the port number 22 is open. A connection was established between the local server and the client server. Process -aux grep root. It will show you the services which are running as root services. To use process a execution grep root. So we can see these are the application which is running on the root permission services. User bin temex, which is running as root.
So what we can do, the application termx is running as a root permissions user bin binary, see over here, and let's check the user cd hype. Let's check the history.